Assalamu alaikum everyone, and welcome back to the Linguistic Channel. So this is your trainer Sir Muhammad Hussain Siddiqui with you, and I'm back with my new video, which is about the other 12 idioms, right? If you have gone through my video about 12 idioms, that's perfectly fine, but if you haven't, please go through that so that you can know what are idioms, how to use them, because in this video we'll be learning the other 12 tenses. And as I promised that I'll be making a video about 34 or 33 commonly used idioms. So this is the next part, the second part of the video. The other parts will be coming up very soon. So here we go with the second part. So in second part we have got other idioms from 13 to onwards, right? So the 13th idiom says to cry over spilt milk. All right, so to cry, I told you in my last video that when there is to before an idiom, it means that, you know, there is a verb after that, right? Uske baad ek verb hota hai. So now you can see cry is a verb. So to cry over spilt milk, it means that you can use this idiom as a normal verb. आपके लिए आसानी यही होगी कि आप इसको as a verb consider करें कि भाई ये पूरा का पूरा ही एक verb है जिसके अंदर forms जो change होंगी they will be according to this. Means cry की forms use होंगी अगर present simple है and you are making a tense with sub third person singular, so ये हो जाएगा cries affirmative में, right? Past simple में हो जाएगा cried, C-R-I-E-D. Right, and future mate will remain the same, right? Okay, so let's take its meaning. To grieve over something useless. हम इसको उर्दू में कहते हैं ना या हिंदी में कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत अब क्या फ़ायदा पछताना, या फिर हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि भाई अब तो हो गया अब क्यों रो रहे हो, ख़त्म हो गई बात, अब कुछ do something else, right? It's a kind of motivational sort of idiom, right? That motivates you. So to cry over spilt milk. Let's go for an example that we have here. It says, there's no need to cry over spilt milk. If the glass is broken, just buy another one. मतलब कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, अगर टूट गया तो टूट गया, दूसरा ले लो, रो क्यों रहे हो, ठीक है? So this is what we got with the first, 13th idiom and the first idiom of this video. So I want you to make sentences in the comments so that I can know that you guys are learning it, practicing it in your daily life. क्योंकि ऐसा अक्सर हमारी लाइफ में होता है कि हम we usually say these sort of sentences कि भाई जब ऐसा होता है कि अगर आप जॉब के लिए कहीं गए हो and you do not get the job or you do not get qualified, so your friends usually say कि यार छोड़ खैर है जो हुआ सो हुआ, अब अपन दूसरी जगह ट्राई करते हैं, but don't cry over spilt milk, you can get another one. Perfect. The next idiom is it's a high time. Means the moment has arrived. मतलब वक्त आ गया है, मतलब यही वक्त है जो आपने करना है. जैसे कि it's a high time वकास has started his business now. मतलब यही वक्त है, वकास ने अपना business start कर दिया है. Now you can take a step ahead, right? Next is to shed crocodile tears. This is mostly we say with to girls कि भाई अपना मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ. But it does not mean that. It's like to pretend to be sad or to be sympathize with someone without really caring about them. मतलब किसी के लिए show करना कि you are very sad but you are not sad actually. You are like okay, मतलब ठीक है, हो गया सो हो गया. मतलब you pretend. Pretend means to show. When you are not and you show, मतलब नकल करना, acting करना. ठीक है? So the sentence here is, don't even think that the beggar is crying. Now you see the beggars लिखा हुआ है यहाँ पे. So this is a short form or contracted form of is, that beggar is. It's not apostrophe s. I mean it is apostrophe s, but it is not for showing the position. It is the short form of is. So don't even think that the beggar is crying. They are just crocodile tears. मतलब वो जो beggar है, that's not the real one, that's a fake one. Hey, the next video is about to feel like a fish out of water.
मीन्स टू फील आउट ऑफ प्लेस, टू फील अनकम्फर्टेबल, ऐसी जगह जो आप जहाँ पे कंफर्टेबल ना हो वहाँ होना। अगर हम इसको उर्दू में एग्जाम्पल लें तो वी कैन टेक इट लाइक दैट के लोग अपने कहीं कहीं रिश्तेदारों के यहाँ दे फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल। खैर, आई वॉज द ओनली वन हु स्पोक इंग्लिश एंड फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द ग्रुप। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है उसका मतलब ये है कि एक मैं ही था जो वहाँ पे अंग्रेजी बोल रहा था, एंड आई फेल्ट रियली अनकम्फर्टेबल बिकॉज मे बी एवरीबडी वॉज लुकिंग एट द गाय कि ये क्या अंग्रेजी झाड़ रहा है। खैर, नेक्स्ट इज टू निप इन द बड, विच मीन्स टू स्टॉप इन एविल इन द अर्ली ईयर्स, मतलब बुराई को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना, या उसके बिल्कुल बुनियादी स्टेप्स में ही उसको ख़त्म कर देना। दिस मीन्स दैट टू निप इन द बड। एग्जाम्पल, बैड बिहेवियर मस्ट बी निप्ड इन द बड, मतलब बुरा बिहेवियर जैसे शुरू होने लगे उसको वहीं रोक देना चाहिए। उस तरह से बुरी आदतें भी जैसे ही शुरू होने लगे उसको वहीं रोक देना चाहिए, वरना अल्लाह पाक ने एक बुराई में एक अजीब सा कशिश रखी है जिसमें हमें बड़ी कशिश महसूस होती है। तो मतलब ये एक बड़ी अजीब सी इट्स अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग, बट इट इज़ ट्रूथ कि हमें बुराई का काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, द बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द बड। मैंने अभी मस्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट। नेक्स्ट, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? To reform or to behave better, मतलब अपने आप को बेहतर बनाना। You everybody these days trying to turn over a new leaf, means they are trying to leave their bad habits and they're trying to get some better habits. Like the example here says, the criminal promised the judge that he would turn over a new leaf, मतलब कि उस क्रिमिनल ने प्रॉमिस किया जज को कि भाई मैं अपने आप को बेहतर करूंगा, आई विल चेंज माई सेल्फ, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ऑलराइट, ओके, सो नाउ वी हैव द अदर idioms to learn, the other 6 idioms, ठीक है। तो the idiom here is to put into practice, to carry out in deeds, मतलब किसी चीज़ को अमल में लाना, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करना। अच्छा, प्रैक्टिस डज नॉट मीन टू प्रैक्टिस, मस्ट करना नहीं होता प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स टू एक्ट ऑन समथिंग, किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना, किसी चीज़ को काम में लाना, डीड्स में लाना। डीड्स माने अमल। ओके, so the example is, now is the time to put into practice all the good things that you have learned. अब वो वक्त आ गया है जो आपने अच्छी चीज़ें सीखी हैं उनको प्रैक्टिस में लाएं. So now it's the time to put into practice all the idioms that you have learned. Right, this is an example from my side कि अब वो वक्त है कि आपको तमाम sentences जो आपने सीख लिए हैं, तमाम idioms जो आपने सीख लिए हैं, उनको practice में लाना चाहिए and use them in your daily life. The next, a wild goose chase means an enterprise which will not succeed. Right? मतलब ऐसा काम जो आप कर रहे हैं and उसका कोई हासिल वसूल नहीं है. So the thief led the police on a wild goose chase. मतलब वो जो चोर था वो पुलिस को एक ऐसे चेस पे ले गया या ऐसी मतलब वो उसने उसको गुमराह कर दिया पुलिस को. ठीक है. Next, to end in smoke, to have no result, to have no consequences, to come to nothing. मतलब ऐसा काम जिसका कोई रिजल्ट ही ना हो. ऐसा होता है हमारे साथ अक्सर कि भाई our efforts end in smoke. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है. All his efforts ended in smoke. मतलब उसकी तमाम ख्वाहिश कोशिशें मिट्टी में मिल गई, ख़त्म हो गई. जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं ना कि यार माँ बाप का सारा पैसा मेहनत बच्चों पे जो की गई थी वो ज़ाया हो गई. तो हम उसको भी इस तरह से बोल सकते हैं कि all the money, all the investment the parents did on the child ended in smoke. ऐसा नहीं होना चाहिए. This is the kind of thing that I would want to tell. Okay, we should be
really caring towards us. अगर हम अपनी care करेंगे तो हम अपने parents की भी care कर सकते हैं. खैर, so do not let all the efforts of your parents end in smoke. Do something really productive that they feel proud on you. Next, at a loss. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि you are at a loss. इसका मतलब है to be puzzled and not knowing what to do, right? मतलब when you are very much puzzled and you do not know what to do, कि आपने क्या करना है and you're very much confused, ठीक है? तो idioms में मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में कि भाई idioms का मतलब ये होता है कि some very different words are combined and they form a new meaning. So this is an idiom. खैर, the news turned him and he was at loss for words. मतलब उसने जो न्यूज़ थी उसने उसको चौंका दिया and he was at loss of words. मतलब उसके बाद अल्फाज नहीं तो वो कंफ्यूज हो गया था कि भाई मैं क्या बोलूँ इस पर. नेक्स्ट with flying colors, ये तो एक ऐसे idiom है हमने सबने स्कूल्स में पढ़ा अपने. To emerge successfully from some difficult tasks, किसी भी मुश्किल मरहले से आसानी से या अच्छी तरह से उसको कामयाबी से पार कर लेना, पास कर लेना. तो he passes his examination with flying colors. मैं इस पे इतना वो नहीं जाऊँगा. खैर, odds and end, a collection of objects to any group or order left over and discarded. I have no complete sets of textbooks, only odds and ends. I want you to understand this idiom your own self and tell me what do you understand कि इसके क्या मीनिंग है. इसके बहुत आसान मीनिंग है. You can understand from the name, you can understand from its meaning. Even आप इसको आसानी से इसकी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. ठीक है, तो this is your task to actually understand and tell me what is the meaning of odds and ends. Alright, so that's it for today. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe. Have a good day ahead. Allah Hafiz. For more videos, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon.